हेलो देयर, वेलकम बैक टू आवर चैनल CK24। आज मैं इस वीडियो में कंप्यूटर एप्लीकेशन ये ICSE बोर्ड के 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 100 मार्क्स का होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट, और इसमें टाइम होता है 2 आवर्स का। ठीक है, सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं और इसके ऑप्शन से आप टिक करके 1 मार्क्स ज़रूर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे 20 क्वेश्चंस है, तो अगर करेक्ट इसे हम लोग कर लें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके लिए उपयोगी है। इट इज़ फॉर ICSE बोर्ड स्टूडेंट, दोज आर गोइंग टू अपीयर इन 2025 बोर्ड एग्जाम. So I hope this session will be very helpful to you. So let's get start. First question on your screen, as you can see, choose the correct answer to the questions from the given option, having a option. But here written one instruction, you can see, don't copy the question, write only answer the question. Only आपको आंसर ही लिखना है। अगर मान लीजिए कि आपका आंसर यहाँ पे आपका फिगर है और ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर में जो दिया गया है ये आपका कैसा है, तो पहला बोलता है नेम द अबव स्ट्रक्चर। ए 1 डायमेंशनल अरे, बी 2 डायमेंशनल अरे विथ 4 रोज एंड 5 कॉलम्स, सी 3 डायमेंशनल अरे एंड डी 2 डायमेंशनल अरे विथ 5 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 कॉलम्स है। नो, ये रो होता है। क्या होता है? ये रो होता है। ठीक है, और ये होता है कॉलम 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कौन सा आंसर है? ये किस तरह का आंसर है, इसको एनालिसिस करना पड़ता है। तो क्या आंसर होगा, सोचिए और जवाब दीजिए। ये 2 डायमेंशनल एरे है जिसमें 4 रोज हैं एंड 5 कॉलम्स है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा कंपाइल्ड कोड बाइट कोड कैन रन ऑन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। नेम द फ्यूचर। A robust and secure, B object oriented, C platform independent, D multi threaded। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हम लोग चलते हैं C के साथ, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपने C को करेक्ट किया। C इज द करेक्ट आंसर। द साइज of dash oblique n is what? 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes और 16 bytes। इसको याद कीजिए। आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ योर कंसेप्ट, दिस इज रिकॉल क्वेश्चन टाइप। सो व्हाट वुड बी द आंसर? वी गो विथ द 2 bytes, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑपरेटर दैट गेट्स द हाइएस्ट प्रेसिडेंस व्हाइल इवेल्युएटिंग द गिवन एक्सप्रेशन। वी हैव A plus B%, C into D minus C. What would it be when we appeared on your screen? Analyze कीजिए इसको। A plus B%, C minus D star means multiply। हम लोग चलें B के साथ, परसेंट, राइट। This indicate the percent symbol. Now, which of the following is a valid Java keyword? If, boolean, static, D switch। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको इसे टिक करना है। 5th नंबर, स्टैटिक। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द आउट ऑफ द फॉलोइंग कोड इज system.out.print 1n in bracket math.ceil bracket start again 6.4 bracket close plus math.floor bracket start -1 -2 bracket close again bracket close. What would it be? What would it be? So A 3 B 4 C 3 D 4.0। हम तो D के साथ जाना चाहेंगे, 4.0, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न्स अ स्ट्रिंग लेंथ ब्रैकेट B चार्ट इन ब्रैकेट int, C replace bracket char, D index of string in bracket
अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन इज यह है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? रिप्लेस चर चर। 7th का ऑप्शन सी होगा। 8 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड्स टू अ स्विच स्टेटमेंट? ए, चेक फॉर एन इक्वलिटी बिटवीन द इनपुट एंड द केस लेवल। बी, सपोर्ट्स फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स। सी, break is used to exist from the switch block. D, case levels are unique. Which is the correct answer of this question? 8, B is the correct answer. Supports floating point constants. Right? Next, consider the array given below. Char ch, close bracket, big bracket, equal to, in curly bracket, A, E, I, O, U. This is the vowels. Write the output of the following statements. System.out.println in bracket ch under the big bracket 0 star means multiply to bracket close semicolon colon. What would be the answer of this question? I think that 130 is the correct answer, right? It is analysis based question. 10, to execute a loop 10 times. Which of the following is the correct? A, B, C, D. Which is the correct? A is the correct option of this question. For in bracket int space I equal to 1 1 semicolon I less than equal to 330 semicolon I plus equal to 2 bracket close. 11 number, a single dimensional array has 50 elements. Which of the following is the correct statement to initialize the last element of 200? X into 51 equal to 100, X into 48, X into 49, X into 50, 100. Which is the correct answer? 11 goes to X 49 equal to 100, right? Next question, that is a 12. Method of prototype for the method compute which accepts to integer arguments and returns true or false. Void compute, boolean compute, or D, int compute. Which is the correct answer? B is the correct answer. Boolean compute in bracket int A comma int B bracket close. It is understanding based question. Next, 13. The statement that brings the control back to the calling method is A, break, B, system.exit 0, C, continue, D, return. What would be the answer? D is the answer, return. Okay. 14 number. The default value of Boolean variable is 0, false, false, true. I think that it is false. Small letter, not capital letter. This is false also, but here is FALSE, सारा स्मॉल लेटर में होता है. ठीक है. 15 नंबर. द मेथड टू कन्वर्ट अ लोअर केस कैरेक्टर टू अपर केस इज व्हाट? विच विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? रिकॉल इट. C is the correct answer. Character dot to upper case in bracket char bracket close. That is 16. As have us assertion and reason. Integer class can be used in program without calling a package. Reason, it belongs to the default package java.language. A, B, C, D. The assertion reason you know very well. We have 4 options, so we go with the A. Both assertion and reason are true, and reason R is the correct explanation of assertion A. This is application based question. So now that is 17 number. A student executes the following code to increase the value of a variable x by 2. He has written the following statement which is incorrect. X equal to plus 2. What will be the correct statement? A given x plus equal to 2, B x equal to 2, C x equal to x plus 2. Only A is correct, or only C is correct, or all the 3, or D both A and C. Which is the correct option? It is 17, so I go with the D. A and C is correct. A and C is correct.
B is not correct. Okay. That is 18 number. The statement used to find the total number of strings present in the string array. Strings S bracket big is S length bracket length S in a bracket len in a bracket S. D C B A. 4 options we have. So we go with which option? That is 18 number question. I will go with only S length, that is A. 19 number. Consider the following program segments in which the statements are jumbled. Choose the correct order of statements to swap to variable using the third variable void swap int A int B. We have a 4 option, so I would like to tick B. 3 4 1 2 is the correct answer of this question. Now the next question and the last question of this session, we have 4 option. Reason or assertion. Assertion is an argument is a value that is passed to a method when it is called. Reason, variables which are declared in a method prototype to receive values are called actual parameters. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन रहता है. assertion और reason में आप जानते हैं, तो हम किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? सी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे. A is true but reason is false. So thanks for watching. और आप सभी को ये क्वेश्चंस जो है सपोर्ट करे अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए. मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये कंप्यूटर क्वेश्चन जो MCQ है वो सिर्फ ICSE बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है. और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आप उसमें सफल हों, यही मेरी कामना है. जय हिंद.